Good afternoon. Welcome, ladies and gentlemen, to what has now become a KLF tradition, Conversation with Mohammed Hanif. Um, as I was walking towards the tent for the main garden, I could hear loud rendition of Badtamiz Dil. और मैं भी हनीफ से पूछने ही वाली थी कि आजकल उन्होंने फ़िल्मों के गानों के लिरिक लिखना शुरू कर दिए हैं। शायद मेरी रिसर्च अधूरी रह गई और उन्होंने इस गाने के लिरिक्स भी लिखे हों। तो ऐसी कोई बात तो नहीं है हनीफ? नहीं है, काश नहीं। अच्छा, लेकिन आपने इस किस्म का कुछ गाना लिखा तो है। I've been privately interviewing Sarmat Khusat, whose upcoming film Manto has a song written by you, and according to him, it's very risque and required a certain tongue-in-cheek humor, which is why he approached you. Can you tell us a little about it? आई मीन वो गाना तो गा के ही सुनाया जा सकता है। गाने के बारे में तो मेरा ख्याल है वो अभी कंपोज हो रहा है, तो वो उसकी तो सेटिंग क्या है? उसकी सेटिंग जो मुझे याद है कि कुछ बेसिक किस्म की है। लड़का है, लड़की है और एक ट्रेन है और उसमें प्लेटफॉर्म्स आते हैं और मेरा ख्याल है लड़का लड़की को कुछ चीज़ें ला के देता रहता है और वो खाती रहती है। सो इट्स क्वाइट बेसिक। आई डोंट नो सरमद को इसमें रिस्के चीज़ क्या लगी, बट आई गेस वो फिर उनसे अलग से पूछना पड़ेगा। There are so many questions that have already been asked of you, but of particular interest to me is how you navigate so many languages. You write in at least 2, but I suspect you write in 3. And you also have explored multiple genres. अब तो lyrics लिखना शुरू कर दिए हैं, that really counts as poetry. You are known equally for your fiction as well as your non-fiction, and I'm sure you have often been asked about where you draw the line between those two. Now, I specifically want to ask you about the piece you wrote for The Guardian on the elections. Do you remember that piece? vaguely, yes. Vaguely. No, no, you need Does to remember anybody it remember better. the elections, by the way? So so yeah, I kind of In which you made claims such as the PMLN went from house to house promising people airports to get votes. So, would you classify this as fiction or non-fiction? No, this was complete your basic reporting. Nawaz Sharif was in Kamalia, I think. There's a small town in Punjab. और मैंने खुद लाइव टीवी पे उनकी तकरीर सुनी थी। तो उन्होंने पहले मतलब मोटरवे का वादा किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक दिन एयरपोर्ट भी यहाँ पे बन सकता है। तो नहीं, दिस इज़ अब ये नवाज शरीफ ने फिक्शन लिखा हो, मैंने तो बिल्कुल उसको मैंने रिपोर्ट किया था उसको। So as far as I am concerned, that was complete, sort of non-fiction. अब नवाज शरीफ साहब जो है वो फिक्शन लिख रहे थे, non-fiction इसके बारे में हम जल्द जान जाएंगे। जल्द जान जाएंगे। अच्छा, what about your fiction? You have 2 novels, both widely acclaimed. The first one shot you to international fame overnight. It won 2 major awards and was shortlisted for several major international awards. And much of that book does read like reportage turned into fiction through the lens of humor. How far would you agree with that? Well, I think when you're writing a novel, you're basically trying to convince somebody that this really happened. I think that's the kind of, that's how you measure your success. So basically, you're telling a lie with a very, very straight face. And if kind of, people buy into it, then, then as a writer, you think that you've achieved something. You've kind of convinced somebody that this really happened. But since my first book happened to be based upon sort of a couple of real life characters who died in the end, like everybody does.
But people tend to believe it's quite scary actually, that a lot of people believe that this really happened. This is how this man called General Zia died, and these are the people who killed him. So I think that kind of says something about us, that we can make up any old lie and people will believe it. So I think writer in a way is not very different from Nawaz Sharif, that you can promise somebody anything and then people kind of start to believe it. But sometimes, I think I've said this before as well, that sometimes what happens is somebody like from the some senior retired general kind of, sort of takes you into a corner at one of these festival type places, and then says that, beta, you've written a brilliant book, now tell me who told you all this. And then you think that this guy was practically running this country, and he believes kind of, all the nonsense that I've made up. So sometimes you find that scary, that the people will just believe anything. Well, I think that it's not actually perhaps unique to a case of exploding mangoes. The book is often, or actually almost always, categorized as a work of satirical fiction, but it is also a work of historical fiction. And this is a challenge that historical fiction always faces. People will read it and tend to believe that that's exactly what happened, because part of it is based on fact and history. This morning, I was in a session, attending a session with Rob Crilly, who mentioned a case of exploding mangoes, and he said that, that's all he read. He knew nothing about the Zia era in Pakistan, but it felt right. It felt believable, and that has now shaped his view and perception forevermore about the Zia era in Pakistan, which is now a part of history. You your next work of fiction was Our Lady of Alice Bhatti, which is neither satire nor historical fiction. It's a love story, but it also, to me, seems to be a metaphor for many things. Am I onto something? What were you trying to talk about? I'm sure you are on to something, but I don't know what that is. I have no idea. I mean, I haven't read literary theory. I'm not a critic, so I think I was trying to say something. But if I knew what it was that I was trying to say, You then wouldn't I have would written a just novel. then I wouldn't have to write like, sort of a 300-page novel. I would just write an 800 words rant and tell you exactly what I want to say. I won't spend year and year and years, sort of trying to make up these lives. So I think it's slightly more complicated than saying that this is what I am trying to say, or this is what my message is. You're basically trying to create these lives. You live with these characters year after year after year. They stupidly become very real to you. You start caring about them, and sometimes they're very painful to live with. Sometimes they're very painful to let go of. Uh, so yeah, all of that. I don't know if there's a metaphor somewhere in there. Well, I think it's held in the couplet that you have, and the inscription at the beginning of the book, of which the English translation is, "In every man dances a thief, in every man dances a peacock." This complexity of human character and the human condition is kind of a universal in literature. But when I read this book, I felt that this complexity of the thief and the peacock, the good and the bad, the bright and the dark, was a metaphor for Karachi. I mean, this is a couplet by a dear friend who kind of died suddenly. My sort of very talented friends have this habit that they just tend to die very suddenly and young. So while I was finishing this book, he passed away.
and he used to recite this poem, and I remembered it very vividly, and it just seemed to fit. I'm sure there was a metaphor there, but Hassan Dars is dead now, so we'll never really find out what he meant by it. I'm But he was a asking you beautiful what you poem. meant by including it. Okay. I think I was in grief. I was grieving for a sort of a dear friend, and it seemed right that some of him should be part of my book, because after you've spent half your life with people, they do become part of you, and when they're gone, you kind of want to hold on to some bit of that. But this particular couplet had some resonance or pertinence to your story or your main character. Yes, I don't know how though, but it did seem right, and it's a beautiful couplet, and sounds even more beautiful in original Sindhi. So sometimes you do things just because they are just beautiful and seem right, rather than there's no kind of, you must have heard the whole thing about rhyme and reason, and somebody famous used to say that I only care about rhyme because the whole point of reason is that it can take care of itself. Why? And reason will kind of make its way through the world. As an artist, as a writer, sometimes you just care about the rhyme, and not the reason. Well, coming back to reason, your last published book, it's really a monograph, was a monograph on Balochistan. And it's surprisingly difficult to get a hold of. Uh, Yes, I think HRCP published it, and usually anything to do with Balochistan does become a bit difficult. But it wasn't really about Balochistan. It was about these Baloch families whose kids and sons have been kidnapped by our own Pakistan's state agencies, and their families have been protesting for years and years. And as we speak, they're marching towards Islamabad. They started from Quetta. They arrived in Karachi, and now, as I speak, I think they're about to reach Lahore. So they are marching to get some basic form of justice, which is that please give us back our sons. And state doesn't seem to be listening. Media acts quite dumb when it comes to that. So I think that's why there was such kind of deafening silence around the issue. I think that's why I wrote that How wrote that many little book. families? The families who are marching now are only about a dozen, but numbers don't really matter. I mean, those who are protesting, they say that 14,000 people have gone missing. The government says, a few hundred. I think Supreme Court gives a figure of 400 something. These are just Baloch families, and and people who have kidnapped them, they say none, zero. We don't have any of them. So you can, but you can not discuss this in terms of numbers if your son or your brother was picked up by your own state and tortured day after day after day after day, and it was only one individual. I think you would think about that. You would care about that. It won't matter to you that, oh, it's only one person. So I think we shouldn't get into disputes about numbers. I think it's individuals, and the shameful thing is that it's our own state, our own elected government now, our kind of our FC and intelligence agencies. Basically, we pay their salaries, and then they come and kidnap our fellow citizens, and torture them in the most horrendous ways possible. Do you think of yourself as an activist? No, no, No. no. I'm a journalist, so I think so what I did in this case was a basic kind of journalistic job. Somebody comes to you and tells you a story. You go and find the evidence.
and then you write about it. I don't think it's activism. I think it's the most basic kind of journalism. I get paid to do it. So yeah, so that was, as far as I'm concerned, that was like my basic journalistic work. I think that's a nice segue into what I was going to ask you to read. It seems that you have now reached this point, as I said at the opening, this has become a KLF tradition, that there will always be a conversation with Mohammed Hanif. People read your non-fiction regularly, whether it's The Guardian or the Newsline or other publications, and you have now achieved this stature of becoming a public intellectual, even if you deny it or don't want the mantle. More like public joker, I think. Or a professional Public entertainer, I think. That is excellent. You know, the sugar in the medicine. But you have become what we would call a public intellectual, somebody people listen to, which is why the institution where I work at a college this year invited Mohammed Hanif to be our convocation speaker. And Hanif feigned considerable surprise when he was asked and wondered what he should talk about. And he gave an absolutely fantastic speech, which was both entertaining and full of substance. And I think it says a lot maybe for where we have come in terms of discourse as a society in Karachi, at least, that where our generation, you know, would have was weaned on things that were said by, you know, Allama Iqbal ये कहते थे या बाबा कौम ये कहते थे. अब इस नस्ल के, आजकल की नस्ल के बच्चे और नौजवान कहेंगे कि मोहम्मद हनीफ ने हमारी कॉन्वोकेशन पे ये कहा था. तो I think it's wonderful because those are the things they need to be thinking about. इनके कुछ 5 नुकात थे. We requested him to speak in Urdu because, and this might be a personal bias of mine, he's always very funny, but I think he's funnier in Urdu. And we'll talk about that a little bit more later, maybe. इनके 5 नुकात थे, जिनमें से पहला था कि हमें ये क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है. और इस पे इन्होंने जो बात कही, he might. Were you going to share that with us, or are you going to read some other part? I'm going to read some bits from it. I'm a great believer in recycling. So, ek dafa aapne, so some of it might seem odd to you, but I'm assuming that some of you young people are either artists yourself or writers, or at least like reading, and that's why you are here. So I'm just going to read इस तकरीर के Please read the opening. आपने खिताब के मैं कुछ हिस्से जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ. मुझे कौम से खिताब करने का बहुत शौक़ था, तो ये मेरा शौक़ इन्होंने पूरा किया. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब की दावत देकर इज़्ज़त बख्शी. ऐसी इज़्ज़त मुझे एक दफ़ा पहले भी बख्शी गई थी और उसके बाद मुझे बहुत डांट पड़ी थी. 30-35 साल कबल एक हाई स्कूल में मुझे तलबा के नुमाइंदे के तौर पर ख़िताब करने के लिए मदऊ किया गया. मैंने ख़िताब में हेड मास्टर साहब की भैंस का जिक्र कर दिया और ख़िताब ख़त्म होते ही, बल्कि कुछ असातिज़ा ने तो ख़िताब के दौरान ही मुझे डांटना शुरू कर दिया. मैंने उस वक्त तक तकरीरें सिर्फ़ मौलवी हज़रात की सुनी थीं या मोहल्ले के सियासतदानों की. मौलवी हज़रात की तकरीरों में मुसलमानों के शानदार माजी का तज़किरा होता था. बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वगैरह हमने, और सियासतदान जुल्म की दास्तानें सुनाते थे और गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो के नारे लगवाते थे. 13-14 साल की उम्र में मेरे माजी में कोई शानदार कारनामे थे नहीं. समुंदर ही नहीं देखा था तो उसमें घोड़ा कैसे दौड़ाते. स्कूल गांव में था और उसकी 4 दीवारी थी ही नहीं, तो कुछ मुनासिब नहीं था कि मैं ना होने वाली दीवारों को गिराने के लिए नारा लगाऊं. इसलिए मैंने अपनी उस तकरीर में उस जुल्म का जिक्र किया जो हम पर रवा रखा जाता था. वो जुल्म ये था कि हम आधी छुट्टी के वक्त, जिसे उस वक्त तफरीह भी कहते थे, हम तालिब इल्मों की ये ड्यूटी थी कि हम हेड मास्टर साहब की भैंस को नहलाएं. ये कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं था.
हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पर सिर्फ ये भैंस थी जो स्कूल के ग्राउंड में बंधी रहती थी। भैंस ने भी नहलाए जाने पर कोई एतराज़ नहीं किया। आप लोगों ने भैंस सिर्फ टेट्रा पैक के डब्बे में या निहारी की प्लेट में देखी होगी, तो मैं आपके इल्म में इजाफ़ा करता चलूँ कि भैंस अपने जज्बात के इजहार में यकीन नहीं रखती, बस बैठी जुगाली करती रहती है। तो एक तरीके से भैंस को नहलाने से हेडमास्टर साहब भी खुश, हम बच्चे भी खुश। और ये तो बहुत बाद में पता चला कि भैंस का अंग्रेज़ी नाम वाटर बफेलो होता है, तो वो भली मानस नहलाए जाने पर क्यों एतराज़ करती। लेकिन तकरीर बहरहाल हमने करनी थी, तो हमने भैंस का जिक्र दबे लफ्ज़ों में किया और अपनी बात में वज़न डालने के लिए अल्लामा इकबाल का वाहिद शेर जो पूरा याद था वो भी पढ़ दिया। हमारा अब भी ये ख्याल है कि अल्लामा इकबाल के शेर के बगैर कोई तकरीर मुकम्मल हो ही नहीं सकती, इसलिए आप भी सुनिए। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। चंद असातिज़ा ने कहा कि हमने अल्लामा इकबाल की बेइज्जती की है। हेडमास्टर साहब का ख्याल था हमने भैंस की बेइज्जती की है। हेडमास्टर साहब ने माइक हमारे हाथ से छीन कर कहा कि हमने तुझे बोलना सिखाया, तुम्हारे मुंह में ज़ुबान डाली और अब तू हमसे ही ज़ुबान दराजी करता है। उसके बाद उन्होंने भैंस के दर्जात बयान किए। हमने ये सबक पल्ले बांध लिया और उसके बाद ना कभी तकरीर की और ना ही भैंस को नहलाया। आजकल के इन जैसे उस्ताद जो हैं वो बहुत सियाने हो गए हैं, तो इन्होंने मुझे कहा था कि 7 दिन पहले तकरीर लिख कर जमा करवाऊँ, जो मैंने करवा दी और उसके बाद सोचता रहा कि या अल्लाह कहीं फ़ेल तो नहीं हो गया। मेरी उम्र में इंसान डांट सिर्फ बीवी से खा सकता है या अल्ताफ़ हुसैन भाई से। आपके बारे में ये तासुर है कि आप तख़य्युल की दुनिया में रहते हैं, सोचते ज़्यादा और काम कम करते हैं, अपने ख्यालों के घोड़े दौड़ाते हैं। हम नहीं जानते, घर के काम में हाथ नहीं बिटाते। आपसे ये उम्मीद है कि आप में से कुछ सादकैन बनेंगे, कुछ शाकिर अली, कुछ आरिफ हसन बनकर हमें ये बताएगा कि शहर कैसे बनते हैं, कोई राशिद राना बनकर ये दिखाएगा कि शहर तबाह कैसे होते हैं। आप में से कोई एडवर्टाइजिंग में जाएगा और हमारी अपनी ज़मीन का पानी नेस्ले की बोतलों में भर के हमें बेचेगा। कोई हमें दुनिया की सस्ती तरीन मोबाइल फ़ोन कॉल बेचेगा। कोई बहरिया टाउन को बेआबाद जजीरे आबाद करने के गुर सिखाएगा। शायद कोई इस मखमसे में पड़ जाए कि बुत तराशी हलाल है या हराम। शायद कोई ये भी पूछे कि शरीयत में कॉन्सेप्चुअल आर्ट की इजाज़त है या नहीं। कोई अपने हाथों से काम करेगा, किसी के फ़नकारे भट्टियों में, वर्कशॉपों में मज़दूर और कारीगर बनाएंगे। इससे पहले कि आप न्यूयॉर्क और पेरिस की गैलरियों में अपनी नुमाइश की इफ्तिताह के लिए तस्वीर खिंचवाएं, इससे पहले कि आप गरीबों के लिए सस्ते घर बनाएं जो गर्मियों में सर्द रहें और सर्दियों में गर्म, इससे पहले कि आप एक शायराना नाम वाली कोई नई लॉन लॉन्च कर दें, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मुल्क को, इस मुआशरे पर एक नज़र डालें। इसके बारे में आपको जो पढ़ाया गया है, बताया गया है, उसे समझें और अगर समझ नहीं आती तो उस पर सवाल उठाएं। मैंने आपका काम आसान बनाने के लिए एक 5 नुकाती एजेंडा तरतीब दिया है। 5 सवाल हैं जिनका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद से इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करूँगा। पहला सवाल है, क्या हमारा मुल्क इस्लाम का किला है? दूसरा सवाल यह है कि क्या ये हमारी कौम खुदा का तोहफ़ा है? तीसरा सवाल है, हम क्यों कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं? चौथा सवाल है, क्या सिगरेट नोशी वाकई मुज़रे सेहत है? और पांचवा और अहम सवाल ये है कि अगर आर्टिस्ट का आर्ट से दिल भर जाए या अगर वो आर्ट बनाए और उसे बेच ना पाए तो खाए कहाँ से? पहला सवाल, क्या हमारा मुल्क इस्लाम का किला है? आप में से कुछ ने शोबा तामीरात में तालीम हासिल की है। आप जानते हैं कि इमारतें और बस्तियां कैसे बनाई जाती हैं। ये भी जानते होंगे कि किला वहाँ बनाया जाता है जहाँ दुश्मनों की मुसलसल यलगार का ख़तरा हो। ऊंची फसीलों और भारी दरवाज़ों की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर शक होता है कि हर अंदर आने वाला दुश्मन है और बाहर जाने वाला साजिशी या जासूस। हमारे मुल्क में 2 किले बहुत मशहूर हैं, एक लाहौर का शाही किला और दूसरा अटक वाला किला। पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में इन दोनों किलों को टॉर्चर सेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इनके कैद खानों में आम तौर पर सियासी कैदियों, मुबैना दहशत गर्दों और शायरों को रखा जाता था। अब शायर इतने हो गए हैं कि उन्हें लोग घरों में भी रखने को तैयार नहीं हैं। और ये किला जिसके बारे में हम कहते हैं कि हमने इस्लाम की हिफाजत के लिए बनाया है, यहाँ भी हम वही करते हैं जो शाही किले में करते थे। हमने इस्लाम को भी ज़ेर ज़मीन टॉर्चर सेल में बंद कर रखा है
उसे वक्फे वक्फे से बिजली के झटके देते हैं, कभी उसके नाखून खींचे जाते हैं, कभी इस्लाम का जिस्म जलते सिगरेट से दागा जाता है। इस्लाम चीख चीख कर कहता है कि मेरे नाम का तो मतलब ही सलामती है, मेरा तो पैगाम ही अमन है, लेकिन ये तशद्दुद जारी रहता है और इस्लाम इस तरह की बातें करने पर मजबूर हो जाता है कि हिंदुस्तान से रिश्ता क्या, नफ़रत का, इंतकाम का, बिजली का एक और झटका, और इस्लाम चीख उठता है कि शातमे रसूल की एक सज़ा सर तन से जुदा। इस्लाम की सिस्कियाँ इस तहखाने में गूंजती रहती हैं। इस्लाम कहता है मेरे मानने वालों, और कुछ नहीं तो डिक्शनरी उठाकर मेरे नाम का मतलब ही देख लो। फिर बिजली का एक और झटका और इस्लाम पुकार उठता है काफिर काफिर सारे काफिर। फिर इसे अजियत देने वालों में से कोई खड़ा होकर अजान देता है और हम सब सफ़ें बांध कर सरबसजूद हो जाते हैं। इस्लाम की सिस्कियाँ किले में गूंजती रहती हैं। मैंने चूँकि बचपन में ही सीख लिया था कि कोई खिताब मुतालबात के बगैर मुकम्मल नहीं होता, तो मेरा आप सबसे मुतालबा है कि इस्लाम को इस किले से आज़ाद किया जाए और इसे लोगों के दिलों में ज़िंदा रहने का मौका दिया जाए। और आपके लिए ये दुआ है कि आपका दिल किला न बने जो हर आने जाने वाले से डरता हो, जहाँ कोई अजनबी ना आ सकता हो। आपका दिल एक खुला आंगन रहे जहाँ सांस लेने में आसानी हो। दूसरा सवाल है कि क्या ये वतन खुदा का तोहफ़ा है? मैं आपकी जगह होता तो ये पूछता कि क्या हर चीज़ खुदा का तोहफ़ा नहीं है? क्या हमसे ज़रा दूर इस गंदे समंदर पर हज़ारों मील का सफ़र तय करके आए हुए परिंदे खुदा का तोहफ़ा नहीं हैं? क्या इन परिंदों का शिकार करने के लिए कतर, कुवैत और अमारात से आए हुए शेख खुदा का तोहफ़ा नहीं है? हमारे मुल्क के शुमाल में बर्फ़ीले पहाड़ खुदा का तोहफ़ा है। उन पहाड़ों को सर करने के लिए दुनिया के हर कोने से आने वाले कोह पैमा खुदा का तोहफ़ा है, और इन कोह पैमाओं के ताक़ुब में जाकर उनका सर कलम करने वाले मुजाहिद भी अपने आप को खुदा का तोहफ़ा कहते हैं। नौजवानों के लिए मैकडॉनल्ड और बर्गर किंग खुदा का तोहफ़ा हैं, और उनके गटर से हमारे बूढ़े समंदर में गिरता पानी भी खुदा का तोहफ़ा है। कुछ तोहफ़े हमें खुदा ने दिए हैं और कुछ तोहफ़े हम खुदा को देते हैं। नए चमकते शॉपिंग मॉल और सुपर स्टोर्स में सुबह दरवाज़ा खोलने से पहले, धंधा शुरू करने से पहले आम तौर पर तलावत की आवाज़ गूंजती है, और आम तौर पर इसमें वो खूबसूरत आयत ज़रूर शामिल होती है जिसका उर्दू तर्जुमा है, तुम खुदा की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तीसरा सवाल है, क्या हम सब भाई भाई हैं? आपने यकीनन सुना होगा कि तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। हमारी पैदाइश से पहले कुछ लोग, जिनमें बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जनाब भी शामिल थे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाया करते थे। फिर हम कहते थे कि बंगाली हमारे भाई हैं, आजकल बलोच हमारे भाई हैं। जब हम आपकी तरह तालिब इल्म थे तो फ़लस्तीनी हमारे भाई हुआ करते थे। हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए उन्हें वजीफ़े दिए जाते थे। गुज़श्ता चंद सालों में मुझे 3 दफ़ा फ़लस्तीन की यूनिवर्सिटी में मुख्तसर अरसे के लिए पढ़ाने का मौका मिला। क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स था। क्लास में गया तो सब की सब लड़कियां थीं। मैंने पूछा लड़के क्या हुए? मुझे बताया गया कि लड़के या तो कंप्यूटर पर बैठे हैं या फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर तो कंप्यूटर पर ही फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। मैंने अपना तारुफ़ कराया तो एक बच्ची ने शिकायत की कि जब वो अमेरिका या यूरोप सफ़र करती है तो उसे इमिग्रेशन वाले रोक लेते हैं। जाहिलों को फ़लस्तीनी और पाकिस्तानी की कोई तमीज़ नहीं, उसे पाकिस्तानी समझकर बहुत ज़्यादा पूछताछ की जाती है। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि पाकिस्तानियों को भी इन एयरपोर्टों पर रोक लिया जाता है और उन्हें पाकिस्तानी समझकर ही पूछताछ की जाती है। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इन तालिब इल्मों के घर में कोई ना कोई अंकल या बड़ा भाई मौजूद था जिसने कराची या लाहौर या कोयटा की किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की थी। ये सोचकर अफसोस हुआ कि एक ज़माना था कि हमारे अरब मुसलमान भाई पाकिस्तान में तालीम हासिल करने आया करते थे, अब सिर्फ शिकार खेलने आते हैं। हम बलोचों को भी भाई कहते हैं और भाई कहते ही उन पर फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी में ये तीसरा फ़ौजी ऑपरेशन चल रहा है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे बलोच भाई हमसे नाराज़ हैं। मैंने भी एक दफ़ा एक बलोच भाई से यही कहा। उसने कहा हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, हम आपसे बेजार हैं। चौथा और अहम सवाल कि क्या सिगरेट नोशी मुज़रे सेहत है? इस सवाल के 2 जवाब हो ही नहीं सकते। यकीनन मुज़रे सेहत है। अगर यकीन नहीं आता तो मैं साबित करने की कोशिश करता हूँ। जब इमरान खान जवान थे और ये बात नई पता चली थी कि सिगरेट मुज़रे सेहत है, तो हमारे मुल्क के एक बड़े नफ्सियात दान ये दावा करते थे कि अगर इमरान खान एक इश्तिहार में आकर टीवी पर यह कह दे
कि सिगरेट नोशी से नामर्दी का ख़तरा है तो हमारे नौजवान यकीनन सिगरेट पीना छोड़ देंगे, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो ख़वातीन उन्हें शक की नज़र से देखेंगी। इमरान खान को अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए किसी इश्तिहार में आने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। वो ऐसे किसी इश्तिहार में नहीं आए, लेकिन आज भी नौजवान लड़के सिगरेट पीकर एल्बर्ट कैमियो वाला पोज बनाते हैं और लड़कियों को सिगरेट हाथ में लेकर लगता है कि वो 1930s की किसी फिल्म के सेट पर पहुंच गई हैं। लेकिन ये सच्ची बात यह है कि अब कोई भी वजी शख्स सिगरेट नहीं पीता। इमरान खान नहीं पीते, आतिफ असलम नहीं पीता, मिसबाउल हक नहीं पीता, और सुना है कि अब तो अली अज़मत ने भी छोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के वाहिद मारूफ आदमी जो सिगरेट पीते हैं वो हाल ही में रिटायर होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी थे, जो कि चेन स्मोकर थे। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि जब भी कौम पर मुश्किल वक्त आता तो फैसला करने से पहले कहते कि ज़रा रुकें, पहले एक सूटा लगा लूँ। जनरल कियानी की कुछ लोग तारीफ़ भी करते हैं, उन पर इल्ज़ाम भी बहुत लगे, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कहा कि देखो ये जनरल सिगरेट पीते हुए बड़े सेक्सी लगते हैं। बल्कि पिछले महीने एक अखबार ने इंकशाफ किया कि जनरल कियानी की वालिदा माजदा उन्हें प्यार से मज कहकर बुलाती थी, यानी कि भैंस। चूँकि वो अपने जज्बात का इजहार नहीं किया करते थे, ज़रा खामोश तबा थे। हमारी तारीख़ में सिपा सालारों को शाहीन, चीता और शेर वगैरह के लक़ब तो मिले हैं, लेकिन वो पहले सिपा सालार हैं जिन्हें प्यार से किसी ने भैंस कहकर बुलाया। आप हजरात से माजरत, इस फेस्टिवल में ये भैंस पता नहीं कहाँ से घुस आई है, लेकिन मैं चलते चलते आपको कुछ कैरियर एडवाइस देता चलूँ। आर्ट के ज़रिए रोज़ी रोटी कमाना इतना आसान नहीं होता। आर्ट का बाज़ार हर कदम पर आपसे खराज मांगेगा और आपको झुकाने की कोशिश करेगा। आपके कैनवस से वो रंग मांगेगा जो आपको अच्छे नहीं लगते। आपसे वो नक्शे बनवाना चाहेगा जिनकी लकीरें आपके ज़मीर से मुतसादम होंगी। वैसे भी कभी कभी आर्टिस्ट पर ऐसा वक्त आता है कि उसे लगता है कि यह तस्वीर कभी ख़त्म नहीं होगी, मेरे बनाए हुए लॉन के प्रिंट कोई नहीं ख़रीदेगा। मुझ पर भी अक्सर ये वक्त आता है कि यूँ लगता है कि किताब कभी ख़त्म ना होगी, इस मज़मून को ना कोई पढ़ेगा ना कोई सुनेगा। आप भी मेरी तरह कभी सोचेंगे कि कोई और धंधा कर लिया जाए। मैंने ऐसी ही कैफियत में एक कामयाब इन्वेस्टमेंट बैंकर से पूछा कि पाकिस्तान में कौन सा कारोबार ऐसा है जो चलता रहेगा, कोई ऐसा धंधा बताएं जो मेरे जैसा इंसान भी कर सकता हो। उसने बग़ैर पलक झपके जवाब दिया, डेयरी फार्मिंग। मैंने कहा जी क्या? उसने कहा भैंस पाल लो। मैं समझा शायद वो मेरे अंदर के देहाती को पहचान गया है और मुझे मेरी औकात याद दिला रहा है, लेकिन फिर उसने पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग की तारीख़, मौसमी हालात, भैंसों के लैक्टेशन साइकिल्स और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में एक तवील लेक्चर दिया। मैं भैंस की सी खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने झिल्ला कर कहा, हनीफ साहब, आखिर हम मुसलमान हैं, इस मुल्क में जो भी हो जाए हम ना दूध पीना छोड़ेंगे ना निहारी खाना, तो भैंसों का कारोबार हमेशा चलता रहेगा। और आखिर में मैं आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता चलूँ कि भैंस दो किस्म की होती है, काले रंग की जिसे काली कहते हैं और भूरे रंग की जिसे भूरी कहते हैं। मैंने बचपन में ना तो अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा पढ़ा था जिसमें उन्होंने फरमाया था कि काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, ना ही मैंने नेल्सन मंडेला का जिक्र सुना था। मेरे बचपन की गलियों में एक बूढ़ा आदमी संदल की एक सुलगती लकड़ी को एक बर्तन में रखे गली के बीच से गुज़रता था और हर भैंस के पास रुक कर उसे संदल की धुनी देता था और ये आवाज़ लगाता था, खैर कालियाँ दी, खैर भूरियाँ दी, आप सबकी भी खैर। बहुत शुक्रिया। कल अखबार वाले ये ना लिख दें कि मोहम्मद हनीफ ने कहा कि सबको भैंस पाल लेनी चाहिए। So, where are you going with your writing practice next? What next opus can we expect coming out of your imagination? Something in Urdu, something in English, fiction, non-fiction? नहीं, मैं fiction I think बीच में बिकॉज आई एम ए जर्नलिस्ट, सो समटाइम्स आई राइट दीज रैंट्स। कभी आप जैसे लोग बुला लेते हैं तो छोटी मोटी तकरीर कर देता हूँ। कभी कोई दोस्त जैसे आपने कहा था कहता है गाना लिख दो तो गाना लिख देता हूँ। लेकिन मुझे वाकई मैं एक नावल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ
तो जैसे ही ये फेस्टिवल ख़त्म होता है मैं भाग के घर पहुंचूंगा, मेज़ पे बैठूंगा और नावल लिखने की कोशिश करूंगा। भैंस के बहुत लतीफ़े हो गए, लेकिन परसों मैं एक ह्यूमन राइट्स के सेशन में बैठा हुआ था, तो उसके बाद मेरे एक पुराने दोस्त डॉक्टर खटाऊ मल हैं, वो उन्होंने कहा कि तुम तो नॉवलिस्ट हो, तुम ह्यूमन राइट्स के सेशन में क्या कर रहे थे। फिर उसने मुझे मिसाल दी, वो थर से आए थे, तो उसने कहा थर में जब भैंस बूढ़ी हो जाती है तो कहते हैं कि चलो अब इसकी बिरयानी बना लो, ये दूध तो देती नहीं। तो तुम्हारे साथ कहीं ये तो नहीं हुआ। तो होपफुली मेरे अंदर जो है कुछ ना कुछ अभी नावल बाकी हैं, वो बैठ के मैं लिखने की कोशिश यकीनन करूँगा। अंग्रेज़ी में या उर्दू में? नावल जो मैं लिख रहा हूँ वो तो अंग्रेज़ी में ही है। कभी ख्वाहिश उठी है कि आप उर्दू में नावल लिखें? उर्दू में लिखने की ख्वाहिश उठती है तो वो लिख लेता हूँ। नावल लिखने की अभी तक नहीं उठी ख्वाहिश, लेकिन हिम्मत नहीं हुई? हिम्मत तो खैर वैसे भी नहीं होती, किसी ज़ुबान में भी नावल लिखने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है वो रोज़ बनाना पड़ती है, रोज़ हिम्मत टूटती है। तो हिम्मत पे तो मत जाएं आप, वो तो एक लंबा वो है इम्तिहान है। लेकिन ये कि जो चीज़ जिस ज़ुबान में आती है तो वो उसी में लिखी जाती है। जैसे गाली आमतौर पे पंजाबी में आती है तो पंजाबी में दे लेते हैं, उसको ट्रांसलेट नहीं करते। तो नावल आमतौर पे अंग्रेज़ी में आता है, बाकी जो हैं कुछ चीज़ें उर्दू में आती हैं कभी। I think the audience is dying to ask questions now. Where are our ushers? Ushers? Gentlemen here. Sorry, I think they weren't prepared. Where are your mics? नहीं बेटा यहाँ, हाँ। Hanif Saab, I have read both of your novels, and I'm a great admirer of both of them. In fact, the lady, Ms. Naqvi, while talking about Our Lady of Alice Bhatti, she said that it was not a satire. Can I beg to differ with you on this point? In fact, in my view, I liked it better than your first novel, because I thought that... Sorry. Should I repeat myself? All right. I was saying that the lady, Ms. Naqvi, while describing the second novel, which is The Lady of Alice Bhatti, said that it is not a satire. Right. I beg to differ, because in my view, it is a great satire on how the saints are made and the hooks of it. May I invite your comment on that? नहीं, आई थिंक आपने कमेंट दिया है, अब मैं कमेंट पे क्या कमेंट दूं, but thank you very much. It's always encouraging. Would you agree with my view? I completely agree with your view. And even if I don't agree with your view, as you don't agree with Ms. Naqvi's view, it's fine. अगर इनकी जगह पे यहाँ पे क्या नाम है उनका शायराना सा जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, शाहिदुल्लाह शाहिद बैठे होते तो फिर आप शायद ना कर सकते डिफ़र। तो अभी कम से कम ये है कि आप बिल्कुल डिफ़र कर सकते। Actually, sir, I agree with you as well, but I think that it's a somewhat different form of humor, because Hanif is always about humor. He uses it in all his writing. अच्छा जी, मेरा नाम फैसल है और मैं हनीफ साहब से ये मालूम करना चाहूँगा कि आप जब बलोच स्ट्रगल को मेंशन करते हैं अपने राइटअप्स में मुख्तलिफ, तो क्या स्टेट अपरेटस की तरफ से आपको भी थ्रेट मिलते हैं? नंबर एक। नंबर दो ये है कि आपने कल एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दी कि मैं पाकिस्तान में इस वजह से भी मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है कि मैं एक पंजाबी हूँ, सुन्नी हूँ और मर्द हूँ। तो मैं ये भूल गया था कि मैं कराची में रहता हूँ। सॉरी, आई वाज बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, बट ओके। अच्छा, इस किस्म की स्टेटमेंट पे
पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला इंटेलेक्चुअल और जो राइटर्स है वहाँ का, उसका आपकी तरफ क्या बिहेवियर होता है? थैंक यू। मेरा वो पंजाब में ज़्यादा पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं है लोगों को, ये बात सिंध में ज़्यादा है, तो इसलिए वो अगर कहीं पे बात छपी भी होगी तो वो पढ़ी नहीं होगी किसी ने। सो मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिलता। जो आपने पहली बात की कि स्टेट थ्रेट, मुझे डायरेक्ट थ्रेट तो कोई नहीं मिलती, लेकिन साल में एक आध दफ़ा जो भी सहाफ़ी या लिखने वाला है पाकिस्तान में, उसको कहीं ना कहीं से फ़ोन आ ही जाता है। लेकिन थ्रेट करने का एक उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका ये होता है कि आप बंदे की आवाज़ बंद कर दें। जैसे अगर मैं एक अंग्रेज़ी में आर्टिकल लिखूँगा उसको 2000 लोग पढ़ेंगे, अगर मैं उर्दू में लिखूँगा उसको 20,000 लोग पढ़ेंगे, वही बात मैं जाके टीवी पे करूँगा तो उसे हो सकता है 2 लाख देख ले। तो आम तौर पे होता ये है कि आपकी एक्सेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको इस तरीके से कंट्रोल करना आसान होता है, बजाय इसके कि आप किसी को थ्रेट दें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो है ये तरीका भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ जो पाकिस्तान में दूसरी बहुत ज़्यादा खुसूसन पंजाब में है, उसके बारे में आपने नहीं कहा। ये कश्मीर की आज़ादी तक जो है वो जंग रहेगी और कश्मीर के लड़ने वाले जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ईद की नमाज़ें पढ़ाते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? मरवाएंगे आप, हमारे दोस्त हैं वैसे। मैं क्या कहूँ, कुछ लोगों को शौक़ था पहले कश्मीर को आज़ाद करवाने का। मैंने काफ़ी अरसे से ज़िक्र नहीं सुना। आजकल तो पाकिस्तान को आज़ाद करवाने की बातें हो रही है, मेरा ख्याल मुज़ाकरात चल रहे हैं, दुआ करें हम। मेरा एक क्वेश्चन है हनीफ साहब, मैं आपके लेफ्ट साइड में खड़ा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने डॉन अखबार में और एक सिंधी अखबार में ये पढ़ा था कि 3 दिन पहले मीरपुर खास में 7 साल की बच्ची थी और 11 साल की बच्ची थी, उसको उन्होंने मुसलमान करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी फतवा दे दी है कि ये मुसलमान हो गए। अब वो किसी मदरसे में है, उसके माँ बाप को मिलाया नहीं जा रहा। तो ये क्या माइनॉरिटीज़ के साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है, इसका क्या किया जाए? मैंने कहा था ना पब्लिक वो मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट जारी है। जब पाकिस्तान बना है तो पता नहीं यहाँ पे कितने थे जो लोग मुसलमान नहीं थे, तो अब तो बहुत थोड़े से बचे। तो मेरा ख्याल है इसी स्पीड पे चलता रहा तो ये मसला हल हो जाएगा खुद ब खुद में। ज़्यादा हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान के मसले का आपको क्या लगता है कितने टाइम तक हल हो सकता है और कैसे हल हो सकता है? मुझे नहीं पता कि कितने अरसे तक, कितने टाइम में हल हो सकता है। ये मामलात जो हैं ये कुछ हुकूमत के हाथ में हैं, कुछ जो लड़ रहे हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, कुछ उनके हाथ में है। तो मुश्किल सवाल है, काश मेरे पास इसका जवाब होता। तो मेरे पास इसका जवाब वाकई नहीं। यहाँ सामने जैसे आपने कहा कि मीडिया पर आप लोगों का एक्सेस कम होता जा रहा है, ये इस तरह भी आपको खामोश किया जा रहा है, तो हम जो राय आमा है, जो पब्लिक ओपिनियन है, फिर वो कैसे डेवलप होगा और जो प्रोग्रेसिव और मॉडर्न साइड है वो हमें मीडिया पर कैसे आएगी? क्योंकि हमारे ऑफिसेस में तो लोग ज़िया को भी बहुत अच्छा कह रहे होते हैं, जो देखते हैं वही कहते हैं। नहीं, जिस तरह की सोसाइटी होगी मेरा ख्याल है उसी तरह का मीडिया होगा। मतलब मतलब ये तो नहीं आप कह सकते कि मीडिया जो है कहीं बाहर से आए, यहीं से हमारे ही भाई बंद हैं, हमारे ही भाई लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक्सपेक्ट करना कि कोई मीडिया जो है वो एक और तरह का हो, जिस तरह का मुआशरा होगा वैसा ही मीडिया होगा। जैसे पंजाब में कहा करते थे कि जैसा मुंह वैसी चपेड़, तो ये तो तो इसका तो मतलब कोई मेरा ख्याल में एज सच कोई हल नहीं है। तू जान दे तू रहने दे। थैंक यू। अगर आप इस लिहाज से देखें, जो आप बात की है बलूचिस्तान का इशू भी है, पाकिस्तान के सामने मिनॉरिटीज़ का भी इशू चल रहा है, तालिबान का अलग चल रहा है।
तो एक बुक भी है कि जी पाकिस्तान इज नॉट अ फेल्ड स्टेट, लेकिन अगर आप फैक्ट्स को देखें तो हम लगता है एक बंद गली में है, कोई रास्ता ही नहीं है आगे। मतलब मिनॉरिटीज़ के साथ भी हो रहा है, बलूचिस्तान, पेशावर। व्हाट डू यू सी गोइंग फॉरवर्ड? I know exactly what I see going forward is that I should sit in a corner and write a novel. I think that's how I see it, and I think various people whatever they do, वो भी ऐसे ही करते हैं. ये हमारे दोस्त हैं अली अकबर नातिक जो हैं, ये आपको मुश्किल सा सवाल पूछेंगे क्योंकि इन्होंने अपना नावल मुकम्मल कर लिया है. तो जी अकबर. नहीं, ये सवाल बहुत आसान है. मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़िया के मतलब आपकी बहुत सारी मालूमात हैं, तो ये उनके साथ जुल्म नहीं हुआ कि फैसल मस्जिद के सेन की बजाय उन्हें बाहर थोड़ा सा दफन किया गया है? तो क्या उन्हें सेन में दखल नहीं अंदर करना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि ये हम ऐसे ही कहते हैं कि हमने उनको दफन कर दिया है. कई लोग आपसे इख्तलाफ करेंगे, वो कहेंगे कि उन्होंने हमें दफन कर दिया है. We'll let the lady in front have a chance. I put my hand first because I just was dying to use the metaphor कि आपकी बहुत सी राइटिंग्स को क्या आप कहेंगे भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं आजकल के एस्टेब्लिशमेंट्स के इसमें. और हनीफ आपका ओपिनियन लेना था प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट और फिर मंटो का उनसे शायद वो होना, नाराज़ होना, सज्जाद ज़हीर और उनका. Where do you align? Do you agree that literature is didactic or is it progressive? Are there is it still departmentalized like that, or do you think those ये two प्रोफेसर movements? साहबा है, इस तरह के सवालों का जवाब ये दे You are a सकते हैं. writer. I thought you were a तो मैं लिख student of सकता- literature Hanif, also. I'm not a public intellectual. I don't have the stature. You can Thank answer you. any question. मैं जिसका जवाब नहीं आता हो उसका जवाब देने का कोई where फायदा do you नहीं. align, आपके Shiva? मैं Where do you okay. align your- Okay, or these terms are passé? मैं Or आपके these- सवाल के जवाब में आपको एक नज़्म अगर इजाज़त हो तो सुना दूं. All. हमारे एक मुश्तरका दोस्त थे मुसद्दिक सावल, वो उनका हाल ही में अचानक इंतकाल हो गया. तो वो वैसे तो गाते थे और सहाफ़ी थे, लेकिन वो शायरी भी किया करते थे. आम तौर पे वो ज़्यादा शेर नहीं करते थे. तो अगर आप इजाज़त दें तो उनकी एक छोटी सी नज़्म है, वो कराची के बारे में है, तो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ. और प्यार से जैसे कराची को बाज़ लोग करांची कहते हैं, तो इस नज़्म का उन्वान है करांची. एक बारिश में सुलगता दिल लिए, एक बारिश में सुलगता दिल लिए, गम की सड़कों पर चला जाता हूँ मैं. भीगता हूँ हादसों से बेखबर, ज़िंदगी और मौत की तकरार करती गाड़ियाँ. एक हजूम तेज़ तर रफ्तार में बहता हुआ, बैन करती हैं मेरे दोनों तरफ जालिम हवा की सीटियाँ. हाँ, इसी बेमहर संग दिल शहर में जो मेरा दिलदार था, गमखार था, जिसने मेरा हाथ भी थामा, सहारा भी दिया, जिसने मुझको ख्वाब में आकर इशारा भी दिया, और फिर एक खूबसूरत रात में कत्ल कर डाला मुझे. इन इमाराते बुलंदो पुरशकों के दरमियाँ जिनमें महवे रक्स रहती हैं हमेशा, सैकड़ों मेज़ें, हज़ारों कुर्सियाँ, रात को भी सूखते कपड़े, थकी आँखें, धड़कती उंगलियाँ, लज्जतों की खट्टी मीठी सी कराहें, अगले दिन के खालीपन की सर्द आहें. सोचता हूँ ये इमारातें जब आबाद हैं तो इस कदर सुनसान क्यों लगती हैं ये. खिड़कियों से छिनकर आती रोशनी में और भी वीरान क्यों लगती हैं ये. और इन हैरानियों के दरमियाँ एक बारिश में सुलगता दिल लिए, गम की सड़कों पर चला जाता हूँ मैं. क्या There's a question here, lady raising her hand. Can we get her a mic? मेरे एक सवाल. After you. उनको पूछने दो बेटा. क्या वो छीन लिया? ये अदील हाशमी साहब सवाल करेंगे. She, never mind. He already had the mic. Now give it to her. I'm sorry, sir. I just wanted to tell you that आप definitely intellectual है and you make us think, which is a very big thing. And I enjoyed your books very much. But what I also enjoyed is your pieces on Karachi.
at Karachi and मुझे ये पूछना था कि आप बाहर भी रहे हैं, you stayed and you are from Punjab. What is your pull towards Karachi? हमारी सिटी की क्या बात है कि आपको इतना हमारे पर तरस आता है और आप इतना अच्छा लिखते हैं? अपने ऊपर तरस आता है, आप पे क्यों तरस आई? मतलब आई डोंट नो, आई थिंक शहरों में मैं पला बड़ा हूँ यहाँ पे. आई काइंड ऑफ फाउंड माय फर्स्ट जॉब हियर, यहाँ पे ही. मतलब सारा प्यार भी यहाँ पे मिला, दुश्मन भी यहाँ पे बनाए. तो उस तरह से एक शहर से आपका वो हो जाता है रिश्ता. वैसे भी अल्ताफ़ भाई का शहर है, हु कांट. हनीफ साहब, मेरा नाम शिराज खान है, एक्सप्रेस न्यूज़ कराची से. हम लोग अक्सर चाय की प्याली पे व्हाट इफ और अगर ऐसा हो डिस्कस करते हैं, तो मेरा सवाल भी थोड़ा ख्याली सा है. तालिबान से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर हुकूमत ये ऐलान करती कि हमारी टीम में मोहम्मद हनीफ जाएंगे, तो वो कौन से 3 काम थे जो मोहम्मद हनीफ करते हैं? मेरा ख्याल है आलिया नकवी को अगर भेज देते तो शायद बेहतर होता. नहीं, मैं मतलब क्या इस बारे में कह सकता हूँ. मैं ख़ुद भी वो उस दिन कह रहा था कि वो मेरा ख्याल है परवीन शाकिर की एक किताब थी या नज़्म थी बहुत मशहूर, जिसका नाम था खुद कलामी. तो मेरा ख्याल है डायलॉग से ज़्यादा ये खुद कलामी है. कुछ मतलब कुछ बुज़ुर्ग लोग जो है अपने आप से बातें कर रहे हैं, जिसमें उनको शायद कुछ खुद लज्जती का आंसर भी मिलता हो. लेकिन लेकिन मेरा ख्याल है ये कोई उस तरह का डायलॉग, और मुझे वैसे भी डायलॉग करना मतलब मैं तो यही उन्हें कहता कि जाने दो यार, छोड़. There's a question here, gentleman waiting for a while at the back. आपने अपनी जामे तकरीर में बहुत से मायनाज इश्तिहारों का जिक्र किया, जिसमें सबसे सस्ती कॉल का एक बेढंगम से इश्तिहार था, उसका जिक्र भी था. मैं जानना ये चाह रहा था कि आप नॉवलिस्ट हैं, तो इश्तिहारों की तरह शॉर्ट स्टोरीज़ का भी शौक़ है? शॉर्ट स्टोरीज़ भी करेंगे उसकी कलेक्शन का भी, या नॉवेल्स की तरफ तवज्जो जो है वो? नहीं, मैंने एक लिखी है अभी शॉर्ट स्टोरी, और शॉर्ट स्टोरी लिखना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वो छोटी होती है, तो उस पर मेहनत उतनी करनी पड़ती है और पैसे भी कम मिलते हैं. तो बट इट्स अ गुड एक्सरसाइज. आई कीप वर्किंग ऑन इट, और एक ना एक दिन हो सकता है एक शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन जो है वो मैं कर सकूं. In front जी. here. टाइम हो गया. मेरा नाम है मुर्तज़ा गोहर. आप हैं अच्छा. आपने भैंस का तो जिक्र किया, मगर मैं हूँ बकरियां चराने वाला. सही. और जिन मज्जां का तुसां जिक्र किया, वो जड़ियां मज्जां ने वो वड्डियां मज्जां ने. सही. ते ये जड़े नए नारे आए ने, ते मैं महमूद गजनवी बन के ते तुसानू फतह कर आन लग्या वा तालिबान बन के, ते इथों समंदर दे विचों सोना भी आन लगी है, ਜਿਹੜੀ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ. ਤੇ ਤੁਸਾਨੀ ਨਾਵਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? और मेरा ख्याल है तुसी लिखो, या मैं बकरियां पालनी शुरू कर देता हूँ. मेरा ख्याल है वो बेहतर काम है. बेटा वहाँ पीछे there's a lady. टाइम हो नहीं गया? 2 मिनट हैं, आपको अभी आज़ाद कर देंगे. सिगरेट पीना है? कोई नहीं है, कोई नहीं है. मेरा भी एक क्वेश्चन है यहाँ आपके लेफ्ट राइट पे. जी. सर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको पढ़ते नहीं हैं, मतलब सिर्फ यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं. मेरे बहुत से दोस्त ऐसे यहाँ मौजूद हैं जो सिर्फ सुन रहे हैं आपको फर्स्ट टाइम देखा है उन्होंने आपको. जस्ट इन शॉर्ट एक बात बता दीजिए कि हमारा नंबर 1 दुश्मन इंडिया है या एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस? इन शॉर्ट. वैसे तो आपका तमाम लिटरेचर इसी पे बेस करता है, लेकिन कुछ लोगों को सुनवाना है मुझे ये बात. थैंक यू. मेरा ख्याल है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद हैं. मतलब बहुत. अच्छा, 2 आखिरी सवाल. एक, this lady here and then this young man here has been waiting for a while and then we have to end. Hanif, I was wondering if you have considered translating your work into not only Urdu but other regional languages, and do you think that would make your books more accessible?
Now, a friend of mine has just finished. No, in fact, he finished 6 months ago. He's translated A Case of Exploding Mangoes into Urdu, and I am editing it right now. But I'm a bit lazy, so it's slow. But hopefully this year I should be able to publish it. I do object to you calling certain languages regional languages. I mean, I think all languages are languages. I think English is a regional language which is spoken in Defence and Clifton and now other parts of Pakistan. But बाकी जो है पंजाबी, I think Sindhi जो है, I don't think people like it when you call their language a regional language. I have a question, and I ask everyone this, or sometimes people ask me this. और मैं सोचा था मैं आपसे पूछूं कि minorities पे इतना तशद्दुद हो रहा है, सब मारे जा रहे हैं, और हम कहते हैं कि ना हो, और there's a thought in the liberal community कि the future of Pakistan is probably supposed to be secular. At least some people say that. So the question that comes into my mind at the end is, then what is the difference between India and Pakistan? I mean, obviously I'm Pakistani and we're all Pakistani. But then what is the ideology that we stand for? And I have a very small question besides that, जो my friend wanted me to ask you, कि कौन सी ऐसी कोई चीज़ है जो आप चाहेंगे कि हर कोई यहाँ पर भी पढ़े? हर कोई यहाँ पर भी पढ़े जो आपने किसी और राइटर का, कातिब का पढ़ा हो? मतलब मैं कोई प्रिस्क्रिप्टिव नहीं हूँ, हर तरह की किताबें पढ़नी चाहिए. क्यों एक किताब तक महदूद रखें? क्योंकि एक किताब तक इंसान महदूद रहे तो फिर उससे बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं. तो एक से ज़्यादा किताब जो है वो हम सबको पढ़नी चाहिए, कम से कम 2 तो पढ़ ही लेनी चाहिए, एक के बाद एक. And this is the very last question. Mr. Hanif, I almost grew up in a convent. I'm almost a Christian. And I have a lot of Christian friends, and none of us was particularly pleased with your Alice book. We didn't think you got things right over there. Okay. But you claimed that you had to get it off your chest. Sorry? I think you claimed in the book that you had to get this book off your chest. It was bothering you and you had to write it, or something to that effect. I read it a long time ago, so I've forgotten it. Okay. But I wondered if why you felt that you had to write about a subject which we thought you didn't quite grasp it fully. Thank you. Next time I'll try harder. I mean, what can one do? One can't go back and change a book. I mean, and it's a very intimate, personal experience. One writes a book, sort of in in solitude, year after year after year after year. You work on it, and then when somebody reads it, they also read it like sort of by themselves. I mean, 2 people together don't read a book. I haven't seen them do it. So it's a very intimate experience, writing as well as reading, and I'm sure there are things that happen in those intimate moments that nobody is privy to. Well, Christianity, like any major world religion, is not monolithic. And I think perhaps what you may have experienced here is a class divide. The Christianity of your convent schooling would be very different from the experience of Alice and her lover, whose name I've forgotten. And it's really a lot more about their lives as lower caste members of South Asian society than it is about Christianity. I think we need to end with that. Thank you very Hanif, much. Thank you. so You guys have much. been brilliant. Thank you.